Mamata Banerjee has arrived at the Supreme Court for a hearing into the SIR of electoral rolls in West Bengal. Ahead of the hearing, Mamata Banerjee has sought urgent directions from the Supreme Court to halt the deletion of voters from the electoral rolls. She has flagged an imminent threat of large-scale voter disenfranchisement during the ongoing SIR in the state. Now, Banerjee has stated that with the final electoral roll due on February 14th, over 60 lakh hearings remain pending, with barely 4 days left for their completion. The matter will be heard by a bench comprising Chief Justice of India, Suryakant, and Justices Joymala Bakshi and Vipul Pancholi. Banerjee has moved an interlocutory application seeking leave to address the court in person and will be present in the court number 1 along with her legal team, as confirmed by a gate pass issued in her name. Let's in fact look at some of the biggest allegations and what Mamata Banerjee has put across against the Election Commission. So, let's look at the big attacks. Number 1, she has called the CEC or the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar an arrogant liar and the most dishonest election commissioner she has ever seen. So, this is the first big allegation that she is in fact putting across. Let's look at attack number 2. She has accused the ECI or the Election Commission of India of acting as the BJP's IT cell in Parrot. So, she is alleging that they are hand in glove and working as per the BJP's instructions. This is the second attack that she has made. Let's look at the third attack. She has claimed that the SIR or the Special Intensive Revision process has deleted or flagged lakhs of genuine voters, especially poor and minorities. So, she is alleging that in this entire SIR process that is being conducted across West Bengal, lakhs of genuine voters, especially those who are poor and those who are minorities, they are being deleted from the voter list. Let's in fact look at the fourth big attack against the EC. She has said that the ECI is biased and working under BJP pressure to rig Bengal's voter list. Remember that West Bengal is due for assembly elections very soon, and hence she is alleging that the ECI is working or collaborating with the BJP in order to rig Bengal's voter list. This is the fifth allegation that is coming to the fore. She has alleged that the SIR process is an NRC type exercise to disenfranchise people. So, she is stating that this is to make sure that people are deleted completely from the voter list, genuine voters. This is what she is alleging. She is also saying that she has accused the ECI officials of misusing AI to arbitrarily delete names without verification. So, she is also saying that in this entire process AI is being used, they are arbitrarily deleting names without any sort of verification, and hence genuine voters are facing the brunt of this exercise. Let's look at some more allegations that she has made. She said that the ECI humiliated and insulted her delegation during meetings. So, remember that Mamata Banerjee has in fact had this showdown with the EC for quite some time now before she approached the Supreme Court, and she said that during these meetings she is alleged that the ECI humiliated and insulted her delegation. Let's also look at another attack that Mamata Banerjee has leveled against the EC. She has claimed that the voter revision process has caused deaths and atrocities. So, there had been reports of certain BLOs succumbing to the pressure. That is what Mamata Banerjee is alleging, that this entire voter revision process has caused deaths and atrocities because the ECI has not thought this process through. This is what she alleges. Let's in fact look at
the next attack. She has questioned why the SIR is only aggressively pushed in opposition rule states like Bengal. So she is also stating why such kind of SIR processes are only being conducted or pushed aggressively in states where opposition is ruling like Bengal. And finally, the biggest attack that she's made, she's warned that the ECI is destroying democracy and threatening free and fair elections in 2026. So this is in fact the biggest allegation that she's made. She's said that the ECI is destroying democracy and threatening free and fair elections. So these are some of the allegations that have come to the fore in this showdown between Mamata Banerjee and the Election Commission of India. Remember that Mamata Banerjee has levelled these various allegations ranging from warning that the ECI is destroying democracy to also saying that the ECI is working in collaboration with the Bharatiya Janata Party. So these are some of the biggest allegations that have in fact come to the fore. She is saying that genuine voters are in fact being targeted by the ECI. They are being deleted, their names are being deleted from the voter list, and hence she has in fact filed this petition over there in the Supreme Court. Remember that we are getting live updates from the Supreme Court where this entire case is being heard in court number 1. We are also learning through sources who are telling us that Mamata Banerjee will be present inside the courtroom and has filed an application to put forth her views as well during this entire hearing. So she's filed that application to seek permission to put forth her case as well, and this is something that is coming to the fore. We are getting you those visuals when she arrived at the Supreme Court. They're playing on your screens right now. Remember, security has been tightened over there outside the apex court, and we are now learning that anytime soon this case will be heard. Let me in fact go across to Mr. Dilip Ghosh, BJP leader, who's joining us via the phone line. Thank you so much, sir, for joining us on the broadcast. We appreciate your time. So when we are looking at this entire showdown, a lot of allegations made by the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. Today there is a hearing in the Supreme Court regarding the same. देखिए, एसआईआर तो पूरा देश भर में हो रहा है, कहीं कोई कॉम्प्लेन नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। और बिहार में एसआईआर पूरा हो गया, चुनाव भी पूरा हो गया है, सरकार बन गया है। लेकिन वेस्ट बंगाल में एसआईआर को लेके कॉम्प्लेन सुप्रीम कोर्ट तक गई, लॉयर्स के ऊपर भरोसा नहीं, चीफ मिनिस्टर खुद लड़ने चली गई। और बंगाल में सारा कुछ कोर्ट से ही निर्णय होता है। यहाँ 26,000 नौकरी का, स्कूल टीचर्स का घोटाला हुआ, वो लोग केस लड़ रहे हैं। यहाँ सरकारी कर्मचारी को डीए नहीं मिलता है, वो लोग केस में जाते हैं। और खुद ममता बनर्जी आप चुनाव कमीशन के खिलाफ कोर्ट में चली गई, तो यहाँ सरकार है वो न्याय नहीं देती है। और सरकार की, देश की जितना सिस्टम है, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबका खिलाफ ममता बनर्जी चल रही है। ये बड़ा विचित्र स्थिति है। किसी भी कीमत पर फर्जी वोटर से जीतने का उनका जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए अब अदालत तक पहुंच गई। और सर, जब हम ये पूरे एलिगेशंस देखते हैं, वो ममता बनर्जी ये भी एलेज कर रही हैं कि ये सिर्फ एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है। जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स है वहाँ पर ये कह रही है कि जेन्युइन वोटर्स हैं उनको डिलीट किया जा रहा है, बट बीजेपी की तरफ से भी ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। इनफैक्ट ममता बनर्जी के वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि टीएमसी के जो वोट बैंक है वो है बॉर्डर एरियाज में, वो है ये अर्बन पॉकेट्स में। सर नहीं, देखिए, अब बिहार में भी तो ये लोग विरोध कर रहे थे जब 65 लाख डिलीट हो गया वोटर्स, उसका अगेंस्ट में कोई कंप्लेन नहीं किया किसी पार्टी ने। बंगाल में एक एक विधानसभा में 50, 60, 70 हजार से ऊपर फर्जी वोटर जो माइनस हो गया। केवल फॉर्म फिलअप में इतना माइनस हुआ 58 लाख। अब आगे जब हियरिंग हो रही है, स्क्रूटिनी हो रही है, उसमें बाधा दे रहे हैं, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम तो बदल जाएगा। लेकिन बाप का उम्र है 50 साल, बेटा का 40 साल है, उसका अगेंस्ट में कोई कंप्लेन करता है
तो जायज है, सुनना चाहिए, लेकिन वहाँ भी एसआईआर सेंटर को घेर करके मारपीट करके लोगों को भगा दिया। दूसरे पार्टी का BLA-2 को हमारे पार्टी के लीडर्स जो कंप्लेन कर गए उनको घायल करके भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ सुरक्षा देने के लिए बोला तो कोई पुलिस, ना तो IG, DIG, ना SP, किसी को नहीं दिखाई दिया। एकदम जबरदस्ती यहाँ चुनाव करने की ममता बनर्जी चाह रही हैं। बाकी चुनाव कमीशन देखे, उनके हाथ में सब कुछ है। और सर, अगर हम जब ये पूरी प्रक्रिया को भी देखते हैं, ये भी एलिगेशन सामने आ रहे हैं कि ममता बनर्जी ये इसीलिए फाइल कर रही है सुप्रीम कोर्ट में केस, ताकि ये जो SIR की प्रक्रिया है वो स्टॉल हो जाए। नहीं, ये तो पहले से उन्होंने मना कर रहे थे, SIR करने नहीं देंगे। जो BLO आएगा फॉर्म लेकर उसका हाथ काट देंगे, पेड़ में बांध के मारेंगे। उनके MLA, उनके मंत्री इस तरह धमकी दे रहे हैं। खुद भी DM का मीटिंग में DM लोगों को बोला, देखो तनख्वाह हम देते हैं, किसी का नाम नहीं छूटना चाहिए, वहां से किसी का नाम डिलीट नहीं होना चाहिए। लेकिन SIR यहाँ के लोगों ने बहुत सचेत हैं, तो पहले ही उन लोग फॉर्म फिलअप कर दिया। लेकिन जो फर्जी नाम उन्होंने जिसमें लगाया है उसके अगेंस्ट में कंप्लेन हो रहा है, उसको छानबीन करने नहीं देंगे। और वो चाहे कितना भी डिले करे, चुनाव तो होना है, चाहे राष्ट्रपति शासन हो जाए, कुछ भी हो जाए। बंगाल में अलग कानून तो नहीं चलेगा, पूरा देश के साथ ही यहाँ भी उसी सिस्टम में चलेगा सब कुछ। और सर, ये जो एलिगेशंस लगा रही है ममता बनर्जी जी कि ECI जो है BJP के प्रेशर में काम कर रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो कोई भी लगा सकता है उसमें आरोप। उसमें क्या, उसका सार्वत्ता होना चाहिए ना। आप कानूनी ढंग से लड़ रहे हैं, लड़िए, सुप्रीम कोर्ट ठीक है। लेकिन हर बात में देखिए, BLO जो काम कर रहे हैं यहाँ, उनके सरकार के कर्मचारी, गवर्नमेंट, लगभग 80,000 बूथ है यहाँ। उनका रातों रात यूनियन बना करके उनका प्रदर्शन शुरू हो गया है। वो खुद घेराव कर रहे हैं, हम नहीं काम करेंगे, बहुत ज्यादा काम हो गया, जबकि उनको डबल मानधन मिल रहा है और पूरा देश में चल रहा है, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं है। बाकी प्रदेश में भी तो विरोधी का राज्य है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। केवल बंगाल में क्यों होता है? क्योंकि ये यहाँ बांग्लादेश बनाने की जो योजना बना रही ना, चुनाव अगर ठीक ठाक हो जाए वो सफल नहीं हो गए और हारेंगे जरूर। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका।